Hello my creative family, welcome back. I am Simi and today I am sharing with you a very simple house tour of one Himachal flat that I recently came across. So there are no apartment system here. You can see there are simple individual flats over here. So this is a 3 BHK flat and this is the common area. As soon as you enter, then there are different rooms over here. This is one room, then this is another room, and yeah, but there are lights coming in all the rooms. I'll be showing you all separately. So yeah, let's begin. यहाँ से शुरू करते हैं। ये यहाँ से अभी हम लोग आए हैं, ये वही सीढ़ी है जहाँ से अभी हम लोग नीचे आए हैं। एंड इधर ये 2 वॉशरूम्स है, 2 बेसिन्स है। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो इस तरफ एक रूम है। तो आइए सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली रूम आपको लेके चलती हूँ। इस तरह से है जो रूम्स होते हैं। यहाँ से आपकी व्यू आपकी आ जाती है काफ़ी, इस तरह का व्यू है। जंगल, पेड़ों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट रूम हो जाता है। आइए सेकंड रूम में जाके देखते हैं। इसके जस्ट साइड में एक सेकंड रूम है। ये वाला बहुत अच्छा वेंटिलेटेड है। इसमें 2 विंडोज है। इस विंडो से वही सेम व्यू है जो उधर से आ रही है। तो ये एक रूम और मिल जाता है हमें। विंडो से व्यू दिखा देते हैं। इतना अच्छा व्यू आता है यहाँ से। So this is just an empty house tour of Himachal, so that you can also get some idea about how the houses of Himachal Pradesh looks like, how the routes are, and कैसी आपको व्यू आती है balcony से और windows से. So this is a kitchen. This is not a modular kitchen. This flat is on rent, and this is what we would be getting. यहाँ पे नीचे इस तरह के 2-3 drawers दिए हैं, and ऊपर में just एक simple सा shelf. Tiles अच्छे लगा के दिए हैं, and this is the kitchen. So this was the kitchen, and now just beside the kitchen there's one more room. There also some tiles is provided, so I can use it as a utility room. There are taps even provided, so it can be used as a utility room, or it can be also used as a puja room or a store room, something like that. Then this is another room. The views from the houses of Himachal are very beautiful. Lots of greenery, lots of fresh air, the views of mountains and everything. And this house, as I said, is on rent, and the rent is very reasonable over here in Himachal if you compare it with other metro towns. Like this house is just in for 13,000 rupees, and there are no other maintenance charges or any other charges. Those are not here. So it's a total of only 13,000 rupees for such a big flat. And this is the drawing room I would be making maybe. So this room is not so lighted, but all other rooms are very lighted. So this was just a sample house that I saw in Himachal. So that's all for this video guys. I really hope that you enjoyed watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. सो आई एम श्योर कि बिकॉज ये वाली घर अगर दिल्ली में होती या और किसी मेट्रो स्टेशन में, देन ये 25,000 to 30,000 की होती. बट दीज आर रियली रीजनेबल ओवर हियर. That's all for this video guys. I'll see you next time very soon. Till then, take care and bye bye.